Jai Hind everyone. Good afternoon, students. Today we will be covering the entire class 10 NCRT of science. We will be doing all the chapters in this one video and I will be explaining to you all the concepts. But as it is a short video, you must listen carefully and you must read the NCRT in depth. So we will start with the basics. The chemical reactions and equations. In this chapter, it starts with these certain examples, which are in which you are told to think what happens when milk is left at room temperature during summers. Food gets digested by body and we respire. So basically, physical and chemical changes it is talking about. So various kinds of changes take place when the food is cooked. Chemical change takes place. All right, the nature of the substance of food gets changed. For example, the cooked rotis cannot be turned back to atta, and similarly, like grapes get fermented, again chemical change is taking place. So these are some of the examples which are given to us. See this figure here: burning of magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in watch glass is shown. This is an activity which you can attempt in lab. You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. All right, so this powder is magnesium oxide. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. This can be an objective question. All right. Take a few another activities there regarding nitrate solution in test tube and zinc granules in a flask or test tube. All right. So in this activity also you will find that certain observations you will be able to make, like when a chemical reaction has taken place, a change in state of the substance will occur, a change in color will occur, evolution of gas will be present. Like here, as we saw in the case of magnesium ribbon, dazzling white flame was produced, and along with that we got a powder called magnesium oxide. All right, this happened because magnesium and oxygen reacted with each other. Similarly, potassium iodide solution test is there, and along with the lead nitrate solution, these changes will happen and the temperature will be changed. Mostly, the temperature will increase. So, as we observe the changes around us, we can see that there are large variety of chemical reactions taking place around us, and we will be studying various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. All right, so let us move forward. Let us study the chemical equations. So, when magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. All right, so in a shorter form, we will express it as an equation. The new substance will be magnesium oxide. The word equation shows change of reactants to produce through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with plus sign between them. Similarly, the products are written on the right hand side with the plus sign between them. This is how you represent what? A chemical equation. Alright, so this is what the definition of presenting a chemical equation as to the word equation shows what? Change of reactants to produce, to products. Change of reactants to products. So what does the equation show? A change of reactants to products through an arrow placed between them. Alright, so there is an LHS and there is an RHS, and the arrow points out to the direction of the reaction. So here you will have an arrow. Writing chemical equation. See, magnesium plus oxygen, which are our what? Which are our reactants. They will form magnesium oxide, which is what? Our product. Alright, and this is the direction of reaction. So these are our reactants. This is our product. Now you can see, you can count and compare the number of atoms of each element on LHS and RHS of the arrow. So here you have two oxygen atoms, one oxygen atom here, one and one. Magnesium is balanced, oxygen is not balanced. But when you will go on balancing the oxygen, the magnesium will become unbalanced. So here you will have to add 2 and here you will have to add 2, right? So this is what? Skeletal chemical equation. Because it is unbalanced. The mass is not same on both sides of the equation. Unbalanced है, same mass नहीं है दोनों साइड में, तो skeletal chemical equation है ये. ठीक है, अब इसे बैलेंस करेंगे अपन तो देखिएगा इक्वेशन बनेगी.
इसका तो हो गया ना. लेट अस सी दिस. जिंक प्लस सल्फर एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है. तो जिंक, अभी यहाँ पे देखो काउंट करके दिखा रखा है. Zn plus H2SO4 is equals to ZnSO4 plus H2. Now H is 2. Alright. So RHS में H2 है और LHS में भी अपन ने देखा H2 है. SO4 क्या है? 4 है बराबर है. और Zn भी 1 है. और अपना सल्फर ऑक्सीजन दोनों मतलब बराबर है. सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सॉरी, है ना. तो ये बराबर है एकदम. ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. क्या है ये? बैलेंस्ड इक्वेशन है. ये स्केलेटल इक्वेशन तो नहीं है. नहीं, ये क्या है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन. अब इसमें H2 है, यहाँ पे H2 है, ठीक है. O यहाँ पे देखिएगा, O यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया. तो H क्या हो गया मेरा? H मेरा क्या हो गया? 8 हो गया. तो मैंने इधर भी 4 कर दिया. अब H बराबर हो गया. और Fe यहाँ पे 3 है, तो इसको मैंने 3 कर दिया. तो ऐसी एक इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. एग्जैक्टली दिस इक्वेशन इज मेड विच वी हैव मेड राइट हियर. Alright, 3 4 4. So this is how you balance the equation. Alright, you can see the steps. The steps are just adding 4 wherein there was 1 and then I added 2 where there was 8. Alright, यहाँ पे क्या बन गया था? क्योंकि 4 2s are 8. So now here I added 4. 4 2s are 8 and 4 and 4 got balanced. So this is how we do it. Alright, now it is asking you to write symbols of physical states. You carefully examine the balanced equation. Does it tell us anything about the physical state of each reactant or product? No information has been given. So to make chemical equations more informative, to do what? Make chemical equations more informative. The physical states of reactants and products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid and aqueous and solid states of reactants are mentioned. Alright, so here it is solid, then here it is gas, this H2, and then FeSO4 will be formed solid, then hydrogen will be the gas which will be released. Alright, so symbol G is used along with H2 to indicate that the reaction water is used in the form of steam. ऑलराइट, तो हम वाटर को ऐसे डाल नहीं रहे जैसे पानी गिरा देते हैं. अपन स्टीम का यूज कर रहे हैं उस रिएक्शन में, तभी गैस के फॉर्म में H2O को रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और यू कैन से वाटर वेपर. यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम. So sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. are indicated above or below the arrow of the equation. Right? So here 340 atoms is written. This is very good equation. Let us highlight this. You must remember this equation. It is a beautiful equation. We all know about it. Alright. 6 CO2 plus 6 H2O, sunlight and chlorophyll, C6H12O6 plus 6 O2. Alright. So glucose is C6H12O6 and 6 O2 is also released along with this. So now there are certain questions you must attempt, and then we will now do the types of chemical reactions. See, actually chemical reactions involve breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. ठीक है. क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में? बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. ऑलराइट, लेट अस सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर अपन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वो वाटर लिक्विड होगा तो क्या बनेगा? स्लेक्ड लाइम बनेगा. कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं अपन? क्विक लाइम कहते हैं. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं अपन? स्लेक्ड लाइम कहते हैं. तो क्या ये एक MCQ बन सकता है? अच्छा, अगर मतलब बहुत ही बेसिक्स पूछने हो तो CaO को क्विक लाइम कहते हैं, CaOH2 को स्लेक्ड लाइम कहते हैं. ठीक है जी. अच्छा, जब आप दीवार पे पेंट करते हैं ये देखने को मिलता है. ऑलराइट, सो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? ध्यान से देखेंगे. ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है. अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम क्या था? हमने अभी देखा CaOH2, जिसे अपन क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ऑलराइट, स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 is used while white washing walls. Calcium hydroxide slowly reacts with carbon dioxide and air to form a
thin layer of calcium carbonate on walls. Alright, CaCO3 की thin layer बन जाती है along with H2O. So calcium carbonate is formed after 2-3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. Alright, so what is the chemical formula for marbles? It can be asked. It is interesting to know that the chemical formula for marbles is CaCO3. Alright, now burning of coal का reaction देखते हैं. C plus O2 is equals to CO2. Alright, और formation of water का 2H2 अपन balance form में चल रहे हैं, plus O2 is equals to 2H2O. Alright, burning of natural gas, ये किसका formula है? Methane का plus O2 is equals to CO2 plus H2O. Alright, now do you know that respiration, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की भी बात कर रहे हैं. देखिए इधर, the reactions in which heat is released along with the formation of products is called exothermic chemical reaction. ठीक है, हीट रेस्पिरेशन में भी रिलीज होती है क्योंकि, और डाइजेशन प्रोसेस में भी रिलीज होती है व्हेन फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस टू फॉर्म ग्लूकोज. हीट एंड एनर्जी इज रिलीज टू C6H12O6 प्लस O2. जब अपन ने रेस्पिरेशन किया तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज हुई. ऑलराइट, और decomposition of vegetable matter into compost is also an example of what? Exothermic reaction. Heat is released along with the formation of product. ये क्या है? Exothermic reaction है. Formation of water from H2 and O2 and burning of coal. Alright, so ये अपन ने देखा. उसके बाद अपन ने exothermic reactions cover करे. Decomposition reaction के बारे में देखते हैं अब. मेरे ख्याल से ये 1.1 एक्टिविटी वाला भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, पर उसमें अपना डार्जलिंग वाइट फ्लेम देखने को मिलता है. ऑब्जर्व द, एक बार आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा. 1.1 में हमने कौन सा रिएक्शन देखा था, क्या वो एक्सोथर्मिक है? ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग. तो ये अपन ने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, इनका कलर नोट डाउन किया, बॉइलिंग ट्यूब में इसको डाल दिया और उसके बाद कलर ऑफ क्रिस्टल्स अपन को ऑब्जर्व करना है आफ्टर हीटिंग. देखिए जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनमें अपन ने हीट को एड अप किया. ऑलराइट, तो फेरिक ऑक्साइड निकला, SO2 निकला और SO3 निकला. समझ में आ रहा है? इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. दिस इज व्हाट? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है ये. आपको जब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन समझाना हो किसी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो आप इसका एग्जाम्पल देंगे कि कैसे हम फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं अपने, वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3. ऑलराइट, फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है? Fe2O3 और अपन ने क्या लिए थे? सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे, FeSO4 लिए थे अपन ने. ऑलराइट, तो फेरिक ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है. SO2 SO3 क्या है? गैस है. तो डीकॉम्पोजिशन, अब ये हो गया अपने, ये एग्जाम्पल अपन ने कवर कर लिया. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं ऑन हीटिंग. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. और ये CaO क्या है? क्विकलाइम है, प्लस CO2 निकलेगा और CaCO3 को जब अपन हीट अप करेंगे, जो कि अपना कैल्शियम कार्बोनेट है, तो अपन को क्विकलाइन मिलेगा और CO2 मिलेगा. अपन ने ऊपर एक रिएक्शन देखा था जो इसका ऑपोजिट था. जब अपन CaO में वाटर को ऐड कर रहे थे तो अपन को क्या मिल रहा था? इधर देखिए, CaO में वाटर को ऐड कर रहे थे तो CaOH2 मिल रहा था जो कि स्लेट लाइम था. पर अब इस केस में हम लाइमस्टोन को ले रहे हैं, CaCO3 को, उसको अपन हीट अप कर रहे हैं, तो फिर क्या मिल रहा है? क्विक लाइम मिल रहा है, CaO प्लस CO2. ऑलराइट, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं. अब लीड नाइट्रेट में अपन ने हीट डाली तो लीड ऑक्साइड निकली और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली और ऑक्सीजन निकली. ठीक है, electrolysis of water is a very important thing and a very important diagram. You must make it a few times on a piece of paper. You will see that a white sulfur chloride turns grey in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride. Silver chloride क्या है? AgCl. उसमें सनलाइट डाली और आपने पेट्री डिस्क को बाहर रख दिया तो क्या होगा कि जो white silver chloride है वो ग्रे हो जाएगा सनलाइट में, है ना? ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड जी इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट. तो लाइट सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर और क्लोरीन में डीकॉम्पोज कर देती है. तो जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो
कौन से कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है सनलाइट की वजह से। ऑलराइट, जो कि हीट है, तो अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे बिहेव करता है। तो ये जो रिएक्शंस है सिल्वर ब्रोमाइड के, सिल्वर क्लोराइड के, किस में काम आते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आते हैं। ऑलराइट, तो ये इनका एप्लीकेशन हो गया। ये आपने रिएक्शन पढ़ लिया एक, या आपने दूसरा, और ये इसका क्या हुआ, एप्लीकेशन हो गया। we have seen that decomposition reactions require energy in the form of either heat or light or electricity for breaking down the reactants. The reactions in which energy is absorbed is called endothermic reaction. एनर्जी वही जिनमें एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे अपन ने उस एक बहुत बेहतर डेफिनेशन देखी थी। Reaction in which heat is released along with the formation of products is called exothermic reaction, and the reactions in which heat is, यहाँ पे लिख लीजिए ये definition कि reactions in which heat is not released, इसका opposite लिखेंगे अपन absorbed, are called what, endothermic। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। ये भी बहुत आसान है जी। इसमें देखिए जैसे ये एग्जांपल दे रखा है अपन को आयरन का और कॉपर सल्फेट का। अब आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अपना डिस्प्लेस्ड लाइक एज अ रॉ मटेरियल बच जाएगा उस रिएक्शन में। जिंक और CuSO4 कॉपर सल्फेट भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, जिंक सल्फेट बन जाएगा और Cu बच जाएगा। लीड और कॉपर क्लोराइड भी लीड क्लोराइड बना देंगे और Cu बच जाएगा। अब इसके लिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में अपन देखते हैं सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा इस रिएक्शन में, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो जो ब्लैक सब्सटेंस है, ये जो अपन कॉपर पाउडर वाला, ये जो अपन परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, एक बार ध्यान से देखते हैं। जो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर है टू कॉपर ऑक्साइड, उसमें द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बनता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, सो कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सी इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as a result of reverse reaction which takes place and copper is obtained। तो हमने ऑक्सीजन ऐड किया और जो हाइड्रोजन गैस थी विच इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, ऑलराइट, CuO, it turns brown। So if a substance gains oxygen during a reaction, जैसे अपन ने इधर देखा ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो, तो oxidized है। If a substance loses oxygen during reaction, it is said to be reduced। Alright, so during this reaction, as we saw, the copper oxide is losing oxygen and it is being reduced। Alright, उल्टा बोल दिया था शायद पहले मैंने। Copper oxide will lose oxygen and it will be a reduction reaction। The hydrogen will gain oxygen and it is being oxidized। So in other words, in this particular reaction, hydrogen क्या हो रहा है, oxidize हो रहा है, और oxygen क्या हो रहा है, reduce हो रहा है। सॉरी, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो मैं रिडक्शन रिएक्शन को रेड कलर से दर्शाऊंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ब्लू कलर से। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। ऑलराइट, इधर देखिए कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड इज व्हाट, लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। Hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized। In other words, one reactant gets oxidized while other gets reduced during this reaction। Such reactions are called oxidation reduction reactions। ये देखिए यहाँ पे oxidation हो रहा है और यहाँ पे reduction हो रहा है। Other examples are these। Now let us make them जल्दी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका reduction हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका oxidation हो रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अरे रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, HCl का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है इसमें, अब ऑक्सीजन जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू
Cl2, ऑल राइट। सो हाइड्रोजन जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको अपन क्या दर्शाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। वेराज MnO इज रिड्यूस टू MnCl3, ऑल राइट, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जैसा कि अपन ने दिखाया। सो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मिल रहा है एक सब्सटेंस को, और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। If a substance loses oxygen and gains hydrogen during a reaction, it is reduced. All right. All right, this is clear. Oxidation is equals to plus oxygen minus hydrogen. Reduction is equals to minus oxygen and plus hydrogen. Have you observed the effects of oxidation in everyday life? Corrosion. All right, rancidity. All right, the taste of chips. The because when fats and oils are, एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको, ठीक है। corrosion causes damage to car bodies, especially those of iron. तो corrosion of iron is a serious problem because oxidation is added. ऑक्सीजन इज एडेड, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब रैंसिडिटी की बात करें तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। यूजुअली अ सब्सटेंस, बिकॉज ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स और यूजिंग ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। सो डू यू नो दैट chips manufacturers usually flush the bag of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized, because this is very important to prevent rancidity. So herein we have completed this chapter. A complete chemical equation represents reactants, products and their physical state symbolically. Chemical equation is balanced so that number of atoms of each type involved in a chemical reaction are same on the reactant and product side of the equation. Equations must always be balanced. In a combination reaction, two or more substances combine to form a new single substance. Decomposition reactions are opposite to combination reactions. In decomposition reaction, a single substance decomposes to two or more substances. Reactions in which heat is given out is called exothermic. Reaction in which energy is absorbed, मतलब energy का मतलब क्या, heat, light या फिर अपना sunlight है ना, इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब हीट गिवन आउट तो दैट इज एक्सोथर्मिक, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक, ठीक है। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड, a displacement reaction occurs. Two different atoms or a group of ions are exchanged in a double displacement reaction. Precipitation reactions produced insoluble salts. Alright, I hope this is clear. Reactions also involve the gain and loss of oxygen and hydrogen by substances. Oxidation is gain of oxygen or loss of hydrogen. Alright, and reduction is the loss of hydrogen and gain of oxygen. Loss of oxygen and gain of hydrogen, sorry. And so this is it. I hope things were clear. Now you can attempt the question. We will move towards chapter 2, acid, bases and salts. You have learned in your previous classes that sour and bitter taste of food are due to acids and bases. Alright, just give me 1 second. यस, सो एसिड्स एंड बेसिस की हम बात कर रहे थे। बिटर टेस्ट बेसिस देते हैं और एसिड्स क्या देते हैं, सोर टेस्ट देते हैं। आगे अपन देखेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे सोप का एग्जांपल दे रखा है जो कि क्या है, बेसिक है। ऑलराइट, और मिथाइल ऑरेंज का एग्जांपल दे रखा है। फिनोपेथिलीन का फिनोपेथिलीन का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि टेस्ट है एक एसिड बेसिस का। अपन इस पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिटमस सोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। देखिए इधर, litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. Litmus solution Thallophyta के एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, lichen, ठीक है। थैलोफाइटा डिवीजन है, हमने बहुत सारे डिविजन्स पढ़े हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको इसकी डिटेल्स पता होंगी। ऑलराइट, लीचन एक पर्पल डाई, लीचन एक प्लांट है जिससे ये पर्पल डाई निकलती है, जिसको लिटमस बोला जाता है, ठीक है।
It is commonly used as what? It is commonly used as an indicator. When litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. ठीक है, तो जब लिटमस सोल्यूशन भाई एसिडिक भी नहीं होता, ये देखिए, व्हेन लिटमस सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल. देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल और some flowers such as hydrangea, petunia and geranium which indicate the presence of acid and base. सो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सीबीएसई के एग्जाम में, कि हाइड्रांजिया, पेट्यूनिया और जेरेनियम क्या इंडिकेट करते हैं? दे आर यूज्ड फॉर गेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन. सो दीज आर व्हाट? एसिड बेस इंडिकेटर्स, सिंपली इंडिकेटर्स. तो ये पूरा ही एक 2 मार्कर हो सकता है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. कलर क्या होगा? पर्पल होगा जब नीदर एसिड नॉर बेस. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करेंगे और विस्तार से समझेंगे. ऑलराइट, सो ये अपन देख सकते हैं, ये टेबल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं हमको, इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा. और यहाँ पे देखते हैं हम, डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स. सो हम इधर ये वाला रिएक्शन देख रहे हैं. हमने सबसे पहले क्या करा है, जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करके टेस्ट कर रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग. सो ये देखिए आप, जो ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ये हमने किस में डाल रखे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिए हैं टेस्ट ट्यूब में. ऑलराइट, सो उसमें से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म हो रहे हैं. हम इसे और भी एसिड के साथ रिपीट कर सकते हैं, जैसे HCl के साथ कर लो आप, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड के साथ कर लो आप, HNO3 के साथ. ऑलराइट, सो in the above reaction, the metal displaces hydrogen from the acids. This is seen as hydrogen gas. The metal combines with the remaining part of acid and forms the compound called salt. तो एसिड के साथ हमने मेटल को रिएक्ट कराया. ठीक है, एसिड जो कि अपना सल्फ्यूरिक एसिड था, उसके साथ अपन ने जिंक को रिएक्ट कराया, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया उसने अपने सल्फ्यूरिक एसिड से. उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड combines with the remaining part of acid and forms a compound called salt. Alright, thus the reaction with metal of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal is equals to salt plus hydrogen gas. तो यहाँ पे जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इनने क्या सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया. तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है H2SO4 होता है. तो ऑक्सीजन को किसने रिप्लेस किया? सॉरी, हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? मेटल ने रिप्लेस किया. So hydrogen gas is seen. Alright, the reaction takes place can be written below as NaOH. एक सेकेंड. अच्छा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है. इसमें हाँ, अपन सेम चीज़ करेंगे. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, अभी अपन इसके साथ कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस इसमें बनेगी. पर ये सब मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा रिएक्शन. सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई जैसा कि हमने देखा. अब ये देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स. ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस. सोडियम कार्बोनेट को, सी व्हाट वी हैव डन है, सोडियम कार्बोनेट अपन ने थोड़ा सा NaCO3 जो होता है डाला है सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 में. ठीक है, तो अपन को क्या देखने को मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है इस केस में. तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने जो अपना सोडियम कार्बोनेट था उसे HCl के साथ रिएक्ट कराया, जो कि अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसको भी अगर अपन रिएक्ट कराएंगे सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ,
इधर आई राइट, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। HCl, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, NaCl आएगा, H2O होगा और CO2 रिलीज हो जाएगा अपना, और NaCl H2O और CO2 दूसरे में भी रिलीज हो जाएगा अपना। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो ऑन पासिंग दिस सेम कार्बन डाइऑक्साइड gas which is released in our test tube A and test tube B, we observed that CaCO3 white precipitate is formed along with hydrogen. ऑल राइट। सो लाइम वाटर के साथ अगर अपन उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो CaCO3 बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उन एसिड्स में से निकल गया, और ये कौन से एसिड्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है ये, जो कि एसिड्स के साथ अपन रिएक्ट कर रहे हैं, या मेटल कार्बोनेट्स हैं, और H2O बच गया। ऑन पासिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल्स टू CaHCO3 2। ऑल राइट। सो सी, now again we passed it through carbon dioxide, and this is formed, and this is what, soluble in water. So limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt. तो जो मेटल कार्बोनेट्स है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड्स के साथ, और कोई सॉल्ट, कोई कार्बन डाइऑक्साइड और कोई वाटर देंगे। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं। अब एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, तो यही होता है अपना, जो एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे NaOH को आपने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, उसके बाद उसके साथ हाँ HCl डाल रहे हैं, तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा। यही अपना बेसिक वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। अब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, सेम। This reaction will take place. We are asked to write a balanced equation, which we have already done. All right, you can do it and keep practicing these things. All right, reaction of non-metallic oxide with base. Even if you're seeing this video just before an examination for a rapid revision, it is a really good initiative you have taken for yourself. Keep seeing such videos. They will like whatever I'm saying and whatever I'm trying to explain, something or the other will click somewhere and you will be able to recall the concepts in your examination. And all the very best for your examination. Alright, so reaction of non-metallic oxide with base. Now here as we have seen, the carbon dioxide and calcium hydroxide, lime water reacted. So calcium hydroxide is what, base. It reacts with carbon dioxide to form what, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। ऑल राइट। और मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मेटालिक ऑक्साइड का अगर कोई एग्जाम्पल लें अपन, तो अपन को खूब सारे एग्जाम्पल्स है। कॉपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो, मेटालिक ऑक्साइड है। ये अपना काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि भाई जो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं। ठीक है। वॉट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? See, all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acids. ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, वही बल्ब जल जाएगा। तो कैटायन इज प्रेजेंट इन एसिड्स H plus. दिस suggests that acids produce hydrogen ions, H plus ions in solution, which are responsible for their acidic properties. Again, this is the thing, you can do all these formulas. See, this bases generate hydroxide ions, मतलब OH negative ions. Acids क्या करेंगे, H plus ions को generate करेंगे, and electric current will be carried through these ions and then bulb will glow.
एंड OH प्लस आयंस को जनरेट करेंगे अपने बेसिस। देखिए बेसिस जो कि, हाँ ये अलग कंसेप्ट हो गया। बेसिस जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? एल्कलिस, सॉरी alkalis. All right, alkalis. Bases which are soluble in water are called alkalis. All bases do not dissolve in water. And alkali is a base, see here, and alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. That is why they are basic. All right, never taste or touch them as they may cause harm. Alright, here you see now we have identified all acids generate H plus AQ and all bases OH minus, which we can view the neutralization reaction. ठीक है, acid base salt, अब ये अपन ने इसमें रख के देख लिया तो यहाँ पे H2O बन जाता है. This is what neutralization reaction. See this warning sign. It is displayed on containers containing acids and bases. Alright, what is alkali? Alkali is a base that dissolves in water. सी एक्सोथर्मिक होता है ये प्रोसेस, मतलब इसमें हीट जनरेट होती है. इसमें क्या होगी? हीट जनरेट होगी. So care must be taken while making nitric acid and sulfuric acid in water. Acid must be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat may cause mixture to splash out and cause burns. That is why, and this is in the case of acids and base, both can be highly exothermic. So the glass container may also break due to excessive local heating. So you must look out for this warning sign. On can of concentrated sulfuric acid, H2SO4, or bottle of sodium hydroxide pellets. Alright, so mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions per volume. Such a process is called dilution. Alright, dilute कर रहे हैं ना अपन, जब water add करेंगे अपन क्या करेंगे? Acid और base को dilute करेंगे. तो ये simple concept है. How strong are acid or base solutions? We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. Alright, we have also learned in the previous section about the dilution and decrease in the concentration of H and OH minus ions in the solution. So can we quantitatively find the amount of these ions present in the solution? Universal indicator की बात करेंगे हम. ठीक है, अभी देखिएगा. द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल एंड इट हैज बीन डेवलप्ड. सो द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर. ऑलराइट, कितनी पोटेंसी है देखो, पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस मीनिंग पावर. So on the pH scale we can measure pH from 0 to 14. 0 is very acidic and 14 is very alkaline. From 0 to 14, the pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic and basic nature of a solution. Alright. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. Hydronium ion, H plus ion, higher H plus ion, high is the pH value. Sorry, lower is the pH value, H plus, and here what I write, OH minus. Alright, so basic nature is increasing as I am going towards 14. And here what is happening? Acidic nature is increasing as I am going towards 0. So this is what? This is the pH scale. And you can observe this on this litmus paper. Let us see the importance of pH in everyday life. ये अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर लिटमस की बात कर रहे हैं. ऑलराइट. Are plants and animals pH sensitive? So our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only a narrow range of pH change, while there are organisms which can live in highly acidic environments and highly basic environments, but living organisms survive usually in a narrow range of pH change. Alright, when pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन मिल जाते हैं अपने रेन वाटर के साथ. So H2SO4 या HNO3. Alright, when acid rain flows into rivers, it lowers the pH of the river water. So aquatic life becomes difficult. Living for aquatic organisms, even the phenotrophs, the plants and the autotrophs and the heterotrophs in the aquatic medium becomes difficult.
Now let us see acids in other planets. The atmosphere of Venus is made of thick white yellowish clouds of sulfuric acid, S2SO4. Life can exist? No, it is not really possible for life to exist definitely in such an environment. Alright, so what is pH? Matlab, we cannot, you can say, ascertain that the current situational state of a living creature can exist in such an atmosphere. What is the pH of soil in your backyard? See, plants require a specific pH range for their healthy growth. And to find out, you can perform this particular activity. अब इसमें भी यूनिवर्सल इंडिकेटर का आप यूज़ करेंगे. pH in our digestive system, it is very interesting. एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम का देखें तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. ऑलराइट, HCl प्रोड्यूस करता है अपना स्टमक. तो HCl से क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड होता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक. एक सेकेंड. If the stomach produces too much acid, it causes pain and irritation, and to get rid of this pain, people use bases called antacids. Antacids are one such remedy, like this. Yes, milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. So what is milk of magnesia? It is antacid used to cure the situation when stomach produces too much acid. Stomach produces acid like hydrochloric acid. We will study about this. Alright, the pH change as a cause of tooth decay. Tooth decay starts when pH of the mouth is lower than 5.5. Tooth enamel is made of calcium phosphate. See, the hardest substance in the body, calcium phosphate. Tooth enamel is made of what? Calcium phosphate. Isn't this important? Tooth enamel, calcium phosphate, but it is corroded with the pH and degradation because acids are there in sugar and food particles, so it is corroded, and that is why toothpastes are generally what? Basic. Alright, so toothpastes are generally basic. Self defense by animals and plants through chemical warfare. सो हनी भी जब स्टिंग करती है तब एसिड छोड़ देती है, तो उसके लिए बेकिंग सोडा का यूज़ होता है. और जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स होते हैं वो भी मिथेनॉइक एसिड अब छोड़ देते हैं. तो नेटल के बारे में दे रखा है, उसके लिए काफ़ी सारे सोल्यूशंस का यूज़ होता है जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट टेबल लगती है मेरे को. विनेगर क्या है? एसिडिक एसिड है. ऑरेंज क्या है? सिट्रिक एसिड. टैमरिंड में कौन सा एसिड है? टार्टारिक एसिड. टैमरिंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, इमली. सो टमाटो, एक सेकेंड, tomato is oxalic acid. Alright, tomato you will remember oxalic acid. Tamarind you will remember tartaric acid. Orange you will remember citric acid. And vinegar you will remember acidic acid. सोर मिल्क में कौन सा एसिड होगा फिर? लैक्टिक एसिड. लेमन में सिट्रिक एसिड जस्ट लाइक ऑरेंज. ऑलराइट, एंड स्टिंग में मिथेनॉइक एसिड. नेटल स्टिंग में भी मिथेनॉइक एसिड. ऑलराइट, see, nettle is a herbaceous plant which grows in the wild. It has a stinging hair. ये मिथेनॉइक एसिड जब अपन उसे टच कर लेते हैं तो मिथेनॉइक एसिड सिक्रीट होता है. तो डॉग प्लांट की लीफ से अगर अपन उस एरिया को रब करते हैं जहाँ पे अपन को वो हाँ एक्सीडेंटली टच हो जाता है नीटल प्लांट, तो एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है एसिड और बेस के साथ. और जो डॉग प्लांट है वो यूजुअली नेटल प्लांट के पास में ही उगता है. तो नेटल प्लांट रिलीजेस एसिड, डॉग प्लांट बेस, न्यूट्रलाइजेशन हैपेंस. ऑलराइट, मोर अबाउट सॉल्ट्स. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में दे रखा है. पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में दे रखा है. सो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7. ऑन द अदर हैंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो पीएच लेस देन 7 हो जाएगा जो कि एसिडिक हो जाएगा. और स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे देख लीजिए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पीएच मोर देन 7 हो जाएगा. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट देखिए,
हाँ, सी वाटर में काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम these salts and deposits of solid salts are also found in several parts of the world. These are large crystal, often brown due to impurities. This is called rock salt. The beds of rock salts were found when seas of bygone ages dried up. So rock salt is mined like coal. Alright, you will remember this. Rock salt is mined like coal. यस, डांडी मार्च के बारे में बता रखा है. कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. कॉमन सॉल्ट थस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर. ऑलराइट, जो कॉमन सॉल्ट क्या है, रॉ मटेरियल है फॉर केमिकल. सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपन बात करें तो ठीक है, ये सेम प्रोसेस है अपना, एल्कलाई और इसका क्लोर एल्कलाई. तो क्लोरीन गैस इज गिवन एट एन एनोड. ये पूरा अच्छे से आप रिएक्शन करके देख सकते हैं. और हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड. तो दीज 3 प्रोडक्ट्स आर देयर. ऑलराइट, सॉल्ट में क्लोरीन गैस हमको मिली, हाइड्रोजन गैस हमको मिली और NaOH अपन को मिला. हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन काफ़ी यूजेस में ले सकते हैं, मेडिसिन, क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, कॉस्मेटिक्स और ब्लीच. हाउस होल्ड ब्लीचिंग के काम आ सकती है. ब्लीच पाउडर का ये एक रिएक्शन है, बेकिंग सोडा का ये एक रिएक्शन है. ठीक है, ये देखिए, ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें अपन NaCl में H2O और CO2 और NH3 ऐड करेंगे तो NH4Cl बन जाएगा और NaHCO3 बन जाएगा. ठीक है, और इसमें भी सो इसके काफ़ी हाउस होल्ड यूसेज हैं. ऑल राइट, वॉशिंग सोडा का रिएक्शन आप देख सकते हैं. सोडियम कार्बोनेट को अपन ने H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो अपन को वॉशिंग सोडा मिला. और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2. ये आपसे पूछा जा सकता है, Na2CO3 H2O, ये किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का. ऑल राइट, सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा, जो कि क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है. सो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. लाइक वॉशिंग सोडा, जैसे अपन ने सोडियम कार्बोनेट की बात करी है ना, सोडियम कार्बोनेट की बात करी, ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, बोरैक्स बनाने में यूज़ हो सकता है, और क्लीनिंग एजेंट्स में यूज़ हो सकता है, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर की अपन बात करेंगे, उसमें यूज़ हो सकता है. सो आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई. ये देखिए, इसमें अपन को पता चलेगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसके बारे में ये बता रहे हैं अपन को. हाँ, पैरिस ऑफ प्लास्टर इज इम्पॉर्टेंट. इधर पैरिस ऑफ प्लास्टर का कंसेप्ट आ जाता है. ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin, it loses the water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate, CaSO4 half H2O. This is called what, plaster of Paris. जिप्सम को अपन ने क्या करा, हीट करा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के आया. दिस सब्सटेंस इज व्हाट डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर. ब्लूइश कलर का होता है, अगर आपने देखा हो तो, फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन. द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर. ठीक है, 343 केल्विन में अपन ने हीट किया. किसको, जिप्सम को. ऑल राइट, सो यस, so on mixing it with water, it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass. Understood? और ये निकलता भी बहुत मुश्किल से, काटना पड़ जाता है इसको पूरा निकालने के लिए. एक इस तरीके की मशीन होती है जिससे स्किन नहीं कटती आपकी, पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कट जाता है और फिर आपका प्लास्टर बाहर निकल जाता है. इट इज़ यूज मोस्टली बाय डॉक्टर्स. हाफ H2O CaSO4 प्लस 2H2O, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये हमें बता रखी है कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट होता है. Of course, it is used for making toys also, for decoration also, for making surfaces smooth also. All right, तो हमने क्या क्या पढ़ा, acid bases are acid base indicators are dyes or mixture of dyes which are used to indicate the presence of acids or bases. Acidic nature of a substance is due to the formation of H plus ions in a solution. Formation of OH minus ions in a solution is responsible for what, the basic nature of a solution. जी,
यहाँ पे देखिए ये एसिडिक नेचर, ये बेसिक नेचर. When acid reacts with metal, hydrogen gas is evolved, corresponding salt is formed. When base reacts with a metal, along with the evolution of hydrogen gas, salt is formed. Alright, when acid reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives the corresponding salt and carbon dioxide and water. And acid and base's solution in water conduct electricity because they produce hydrogen and hydroxide ions respectively. Alright, so they conduct electricity because ions are getting produced. Living beings carry out their metabolic activity within the optimal pH range. Alright, ये बता रहा है कि 0 to 14 होता है pH range और pH 7 is a neutral solution. More than 7 is basic and less than 7 is acidic. आगे देखते हैं mixing concentrated acids or bases with water is highly exothermic process. Alright, this can be a good question क्योंकि heat क्या हो रही है, release हो रही है. Acids and bases neutralize each other to form corresponding salts and water. Water of crystallization is the fixed number of water molecules chemically attached to each formula unit of salt in crystalline form. Salts have various uses in everyday life and in industry. Alright. Salts have various uses in everyday life and industry. Now let us read chapter 3, metals and non-metals. In this particular chapter of metal and non-metals, we will be studying properties of metals and uses and many other things like physical properties से start अपन करें तो metals की देखते हैं. सबसे पहले ये कुछ अपन को activities दे रखी हैं, आप ये perform करेंगे तो आप इन conclusions पे आएंगे जो हम पढ़ने वाले हैं. देखो सबसे पहले ये देखते हैं. The ability of metals to be drawn into thin wires is called what? Ductility. सबसे ज़्यादा ductile metal कौन है? Gold. Gold is the most ductile metal. It is because of this property of malleability and ductility, metals can be given different shapes according to their needs. यहाँ पे एक concept मिस हो गया अपन से malleability का. ठीक है, malleability क्या है? Thin sheets. Metals can be beaten into thin sheets. That is malleability. ये देखिए कुकिंग वेसल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बर्नर दे रखा है, मेटल वायर है. metals are good conductors of heat. That is why vessels, cooking vessels are made of metals. क्यों बनाए जाते हैं metals के? क्योंकि they have high melting point, they are good conductor of heat. तो melt तो होगा नहीं और heat भी अच्छे से conduct कर पाएगा तो खाना भी जल्दी से पक पाएगा. Best conductor of heat is silver and copper. So best conductor of heat, again a good question. The best conductors of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. Alright, lead and mercury are comparatively poor conductors of heat and silver and copper are good conductors of heat. ठीक है, तो डक्टाइल कौन सबसे अच्छा होता है? गोल्ड. और कंडक्टर ऑफ हीट सबसे अच्छा कौन होता है? कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर. ठीक है. You must have seen that wires that carry current in your homes have coating of polyvinyl chloride, PVC और rubber like material. क्यों इनसे कोट करते हैं? क्योंकि बेसिकली ये जो अपने मेटल्स होते हैं ये कंडक्टिव होते हैं तो वायर्स पे किसी का पैर लग जाएगा विदाउट वेयरिंग स्लीपर्स ऑफ रबर और विदाउट वेयरिंग गुड शूज देन करंट आ जाएगा. ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? यस. सो दे आर व्हाट? सोनोरस. सोनोरस भी हैं. ठीक है, अब नॉन मेटल्स की अपन बात करते हैं. नॉन मेटल्स की क्या ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स याद रखिएगा. नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. क्या एग्जाम्पल्स है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये देखिए नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड. ऑलराइट, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल. Isn't this interesting? Do non-metals have physical properties similar to that of metals? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए हाँ नॉन मेटल्स के ऑब्जर्वेशंस अगर अपन देखें तो वो इतने मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते
और उसके अलावा वो हीट को भी इतना कंडक्ट नहीं करते, ना वो ज़्यादा सोनोरस होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 वी कैन डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So you must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone. There are exceptions also. And now we will study about these four good exceptions. All right. सबसे पहला exception क्या है? All metals except mercury exist as solids at room temperature. ठीक है. तो mercury does not exist as solid at room temperature. Similarly, non-metal भी अपना bromine जो कि liquid होता है. ठीक है. आगे देखें तो metals have high melting points but gallium and cesium have very low melting points. यूजुअली मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं पर गैलियम और सीजियम का नहीं है इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट. और अपन देखें तो जैसा कि अपन ने इस एग्जांपल में भी देखा था, लीड का जो एग्जांपल था और मरकरी का, वो इतने अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट नहीं है. तो गैलियम मेटल है, सीजियम मेटल है, जल्दी से उसे हीट अप करोगे वो मेल्ट हो जाएगा. यूजुअली मेटल्स इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं. हाँ मतलब सॉरी, उसे पाम पे भी रखोगे गैलियम और सीजियम को तो वो मेल्ट होने लगेंगे. अब आयोडीन एक नॉन मेटल होता है पर क्या होता है, लस्ट्रस होता है. आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस. Now you will see carbon is a non-metal that can exist in different forms. Each form is called allotrope. Alright, carbon is a non-metal that exists in different forms. Each form is called what? Allotrope. Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known and has very high melting point and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. Alkali metals are so soft that they can be cut with a knife and have low densities and low melting points. Okay, so let us continue. Most non-metals produce acidic oxide when dissolved on water. On the other hand, non-metals produce acidic oxide on metals give rise to basic oxides. Is this clear? Now we will study the chemical properties of metals. What happens when metals are burned in air? Metal plus oxygen metal oxide बनाएगा. Metal oxide क्या होगा? Basic होगा. अभी अपन ने पढ़ा. Most metals give rise to basic oxide and most non-metals give rise to acidic oxide. तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? बेसिक ऑक्साइड है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक ऑक्साइड है. सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, such as aluminum oxide, zinc oxide, both acidic as well as sorry. But some metal oxides, such as aluminum oxide and zinc oxide, are showing both acidic and basic behavior. Such metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salts and salt water are known as amphoteric oxides. अब देखिए तो सारे मेटल्स सेम रेट पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन. मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर if they are kept in open. So to protect them and to prevent accidental fires, they are kept in kerosene oil. Alright, at ordinary temperature, surfaces of metals such as magnesium, aluminium and zinc and lead are covered with thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. Alright. Exactly. So silver and gold do not react with oxygen even at high temperatures. Anodizing is the process of forming thick oxide layer of aluminium.
Aluminum develops a thick oxide layer when exposed to air. This aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion. तो ये एल्यूमिनियम का ही लेयर है जिसे अपन एनोडाइजिंग का प्रोसेस बोलते हैं. During anodizing, a clean aluminum article is made anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. This oxygen gas evolved reacts with aluminium to make a thick protective oxide layer. ऑलराइट, अब मेटल्स का वाटर के साथ अपन रिएक्शन करा के देखें तो मेटल ऑक्साइड बनेगी बिल्कुल. और फिर उसके साथ उनका भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी. ये एक बढ़िया एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे. एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा. ऑलराइट, ये देखिए, एक्वा रीजिया रॉयल वाटर इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड. रेशियो क्या है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का? 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. Alright. अब हाँ, सॉल्ट के साथ उसका रिएक्शन करा के अपन देख रहे हैं. ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रख लीजिएगा. मोर रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड. आप इस सीरीज को देखिए. 1 मिनट में वी विल कंटिन्यू. Let us continue. So here we have seen potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. There is an acronym also many of you must be knowing. Please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how copper saves gold. Please stop calling me a careless zebra. Alright, instead learn how copper saves gold. Copper, silver, gold. Alright. मरकरी भी है बीच में, पर इससे अपन को ऊपर ऊपर से याद हो सकते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ऑलराइट, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा. इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड. आगे अपन देखते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रीजेंट्स. व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9. अपन ने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, नोबल गैसेस का. ठीक है, वेलियंसी की बात हो रही है. तो एम शेल और एल शेल में अपन वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके ये चीज़ को बताएंगे. देखिए, इसको एटॉमिक नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
KLMN जो अपने शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक सा एग्जाम्पल है, ये कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स अपन पढ़ते हैं, या फिर ये करवाऊँ, ये छोटा सा, यू विल बी एबल टू डू इट। ऑलराइट, और प्रॉपर्टीज़ भी इनफैक्ट कुछ वो नहीं है, पर हाँ इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले फिजिकल नेचर। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवेयर व्हाट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. You know what is ionic compound? Ionic compound is a chemical substance formed from oppositely charged ions, like cation और anion को बना के आप एक strong electrostatic force से जब उन्हें होल्ड कराओगे, उनके बीच क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा और वो आयोनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। So when metal will react with a non-metal, such compounds will be formed. They have a 3D sort of structure, है ना। आप डायग्राम्स में भी देखेंगे उनको ऐसे डिपिक्ट करके दिखाया जाएगा। एक क्यूब होता है ना, क्यूब, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से उन्हें डिपिक्ट करके दिखाया जाएगा कि ये भाई बन गया एक आयोनिक कंपाउंड। ऑलराइट, और देखिए अब ये यही प्रॉपर्टीज होते, फिजिकल नेचर, ब्रिटल हो गया उनका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों चीज़ें हाई होंगी, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो आयंस एक जगह लॉक्ड होंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। So yes, electricity is passed through solution. Do not conduct electricity because movements of ion in solid is not possible due to their rigid structure. They are tightly packed. All right. Solubility, yes, generally soluble in water. Melting and boiling points, what, high. And ionic compounds are solid and little brittle. Generally soluble in water, insoluble in petrol, kerosene and such salts. Now occurrence of metals, ये important और अच्छा concept है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है अपन को, जल्दी से अपन इसको करते हैं और अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं। पर इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझिएगा आप। एक सेकंड गिव मी वन। हाँ, हम कहाँ पे थे, अकरेंस ऑफ मेटल्स। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो जो अपना क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मेटल्स अपन पाए जाते हैं। टोटल क्रस्ट में तो ऑक्सीजन बहुत, टोटल अर्थ में तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, पर क्रस्ट में हमको किसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो जो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सो दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। जिन मिनरल्स में कुछ मेटल्स होते हैं, दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, हमने पढ़ा था ना अभी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड हाँ यही सीरीज। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन अ फ्री स्टेट। The metals at the bottom of the acidity series are least reactive ones, like Ag, Au. Alright, they are found in a free state. For example, gold, silver, platinum, copper are found in free state. Alright, so least reactive जो होंगे वो free state में मिलेंगे. Copper and silver are also found in combined state of their sulfur or oxide ores. The metals at the top of the activity series are so reactive that they are never found in nature as free elements. और मिडिल वाले मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, सो दे आर फाउंड मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। Yes, ores of many metals are oxides because oxygen is a very reactive element and very abundant on earth. Very reactive element. Thus, on the basis of reactivity, we can group metals into metals of low reactivity, medium reactivity, and high reactivity. Different techniques can be used to obtain the metals and falling under each category. इधर देखिए अब
कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, अब हाई रिएक्टिविटी है तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर होगा और प्योर मेटल मिल जाएगा हमको। लो रिएक्टिविटी का है, जैसे गोल्ड है तो सल्फर ओर है, रोस्टिंग होगी, मेटल होगा और रिफाइनिंग होगी। मीडियम रिएक्टिविटी का है तो कार्बोनेट ओर और सल्फ्यूरिक ओर में उसे डिवाइड किया जाएगा। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन और सल्फ्यूरिक ओर है तो रोस्टिंग। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की बात करें तो ओर्स विच आर माइंड फ्रॉम अर्थ, ये रही अपनी सीरीज। Enrichment of ores. Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. Alright, these impurities are called what? Gangue, impurities. These impurities must be removed from one prior to the extraction of the metal. Alright, the process of removing the gangue from the ores are based on differences between physical and chemical properties of gangue and the ore. The separation techniques are accordingly employed. Extraction of metals in metals low in activity series. You can see that metals low in activity series are very unreactive. Oxides of these metals can be reduced by to metals by heating alone. For example, cinnabar is an ore of mercury. When it is heated in here look, you can look mercury. इधर है ना, it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide. Mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating. Alright. Similarly, copper saves gold, you remember, no? Extracting metals in the middle of the activity series. Metals in the middle such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive. They are usually present as sulfides or carbonates in nature. It is easier to obtain metal from its oxide as compared to sulfides and carbonates. Alright, this process is roasting. And another process in which carbonate ores are changed into oxide is called calcination. And sulfuric wala roasting, carbonate wala calcination. Alright, this you can see, cover this. Alright, this is the equation. आगे बढ़े तो ये वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है। लोअर रिएक्टिविटी वाले अपन को एल्यूमिनियम पाउडर से हीट करने के बाद मिल सकते हैं। AlO3 बन गया, Mn का सोल्यूशन, Mn का जो ओर है, जो मेटल है, अपन ने एक्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से। Extracting metals towards the top of the activity series. Just give me a second. At cathode, at anode. All right. So यही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात कर रहा है, बहुत रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं कि इनको कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से अपन ऑब्टेन कर सकते हैं विथ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। नाउ रिफाइनिंग द मेटल्स। प्योर मेटल्स पाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। So many metals such as copper, zinc, nickel, gold, silver are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode and the strip of pure metal is made the cathode. Alright, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको ये पूरा वर्बैटिम पता होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चंस विल कम. Alright, so this is their pure metal from anode dissolves into the electrolyte, and equivalent amount of pure metal from electrolyte is deposited on the cathode. So the soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down, which will be called what? Anode matte, which are the impurities. And this is a very important diagram in this context. कोरोजन की अपन बात करें तो यही सिल्वर आर्टिकल्स जैसे काले हो जाते हैं, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सल्फ ग्रीनिश ब्राउन कोट बना लेते हैं और आयरन में भी रस्ट बन जाती है। यही अपना क्या है, कोरोजन रिएक्शन है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए क्या करते हैं, तो पेंटिंग हो सकती है, ऑयलिंग हो सकती है, ग्रीजिंग हो सकती है, गैल्वेनाइजिंग हो सकती है, एल्यूमिनियम की क्रोम प्लेटिंग हो सकती है, एनोडाइजिंग हो सकती है और मेकिंग ऑफ अलॉयज हो सकता है। ठीक है,
Galvanization is a method of protecting the steel and iron from rusting. Thin layer of zinc. Alright, किससे कोट करेंगे galvanization में? Zinc से कोट करेंगे. Galvanized article is protected against rusting. Alloying is a good method. Alright, alloying is also a good method. So देखिए, iron is mostly widely used as a metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is very soft. But if it is mixed with small amount of carbon, it becomes hard and strong. So when iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. तो stainless steel कैसे मिलता है? Nickel और chromium को, जो कि hard भी और does not rust. If iron is mixed with some other substance, its properties change. Alright, so nickel and chromium. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be a metal or a non-metal. An alloy is an homogeneous mixture of two or more metals, a metal or a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal, then dissolving other elements in definite proportions, and then it is cooled. So this is what an alloy is. Pure gold 24 karat is very soft, therefore not suitable for jewelry. So it is alloyed with silver or copper to make it hard. So 22 karat is usually used with two parts of either copper or silver. If one of the metals is mercury, then alloy is known as an amalgam. Alright, electrical conductivity and melting point of an alloy is less than pure metals. Bronze is an alloy of copper and tin, we know. Brass is an alloy of copper and zinc. Alright. Bronze, copper plus tin. The wonder of ancient Indian metallurgy. See, iron pillar at Qutub Minar was made around 400 BC by iron workers. It had developed a process which prevented the wrought iron from rusting. This is likely because of the formation of thin film of magnetic oxide on the surface as a result of finishing treatment given to the pillar. So this is because of what? Fe3O4. Painting it with mixture of different salts, then heating and quenching. The iron pillar has not yet rusted. So iron pillar at Delhi near Qutub Minar is an example of an iron pillar, which is a good example of metallurgy which has not rusted. So elements, metals और non-metals हो सकते हैं. Metals lustrous होते हैं, malleable होते हैं, ductile होते हैं, and good conductors of heat and electricity होते हैं. There are solids at room temperature except mercury, which is a liquid. Metals can form positive ions by losing electrons to non-metals. Alright. Metals can combine with oxygen to form basic oxides. Aluminium oxide and zinc oxide shows properties of both bases as well as acidic oxide. ठीक है, और जो दोनों होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं. जैसे जिंक हो गया. डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज. ये चीज़ें है ना, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, एक्टिविटी सीरीज को अपन कहते हैं. मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम देयर ओर्स. मेटलर्जी है. अलॉय क्या है? दो और मोर मेटल का मिक्सचर है. फ्री एलिमेंट्स, इसकी अपन ने बात कर ली. कोरोजन के बारे में अपन ने देखा और यही चीज़ देखी अपन ने. ग्राफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट यूजुअली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस. Yes, non-metals react with hydrogen. This is there, this is given. Just give me a second and we will move towards chapter number 4. एनोडाइजिंग का प्रोसेस अपन ने देखा. Aluminium will be given what? Attractive finish in the process of anodizing. See, all metals except mercury exist as solid at room temperature. Iodine, which is a non-metal but is lustrous. This can be a question. This can be a fill in the blank MCQ type of question. Iodine is a non-metal but it is lustrous. Alright, and all of these have to be remembered by you. These are exceptions. Gallium and cesium have very low melting points. If you put them on your palm, they can melt. Alright, chapter 4 आ गया अपना. Carbon and its compounds. इसको अपन डिटेल में विस्तार से नहीं कर रहे हैं अपन.
कंसेप्ट को समझ रहे हैं और ब्रीफ वे में समझ रहे हैं रिविजन पर्पस के लिए, ठीक है। तो वी केम टू नो हाउ मेनी कंपाउंड्स ऑफ आर इम्पोर्टेंट्स टू अस। ये अपन कार्बन एज अ कंपाउंड को देख के समझते हैं कि इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले अपन बेसिक्स को लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। Alright, the Earth's crust has only 0.02% of carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal, and petroleum, which are fossil fuels. Petroleum. Atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. ठीक है. So importance of carbon is immense. बॉन्डिंग को अपन सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में समझते हैं. इधर देखिए, सबसे पहले अपन इसको कर लेते हैं. Allotropes of carbon. The element carbon exists in different forms in nature with widely varying physical properties. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which carbon atoms are bonded to one another. In diamond, each carbon atom is bonded to four other carbon atoms, forming a rigid three-dimensional structure. In graphite, each carbon atom is bonded to three other carbon atoms. Alright. Giving hexagonal array. And same goes for the graphite structure, which is formed by hexagonal arrays, जिसकी अपन ने बात की. देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर. ऑलराइट, ये C60 बकमिनिस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर दे रखा है. सो यहाँ पे पेंसिल दे रखी है जो कि ग्राफाइट होती है, यहाँ पे रिंग दे रखी है जो कि डायमंड की होती है. These two different structures result in diamond and graphite having different physical properties, although their chemical properties remain to be same. So diamond is the hardest substance while graphite is smooth and slippery. Graphite is also a very good conductor of electricity, unlike other non-metals that you studied in the previous chapter. So graphite एक ऐसा non-metal है जो कि good conductor of electricity और काफ़ी you can say slippery और smooth है. But diamond क्या है? hardest substance है. Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon at very high pressure and temperature. They are not usually distinguishable from natural diamonds. फुलरीन्स हो गए, ठीक है, जो अपन ने C60 की बात करी. शेप ऑफ अ फुटबॉल में जब अपन कार्बन को अरेंज कर देते हैं, लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलरीन. That is why this molecule was called what? Fullerene. Alright. Yes, so now we have to do what? We have to, एक सेकेंड, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड. अब अपन ब्रीफली कोवेलेंट बॉन्ड को समझ लेते हैं. कार्बन कंपाउंड्स एज यू नो आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Alright, try to understand this. You know about the various kinds of bonds like polar, non-polar, and then the various examples of it. If you studied this एक बार, you'll be able to easily grasp it. See, covalent bond is a strong chemical bond formed by the sharing of electron pairs, alright, between two non-metal atoms, non-metal atoms, to achieve a stable full outer shell. So these bonds can be single, double, or triple depending upon the pair shared. जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन हो सकता है. O2 अपन पढ़ते हैं ना. हाँ, मतलब various kinds of elements exist in various kinds of bonds, जैसा कि I'm trying to explain. like नाइट्रोजन का ये हो गया. अब जैसे अपन ने H2O लिख दिया, तो इसमें ऑक्सीजन is sharing its electrons with two hydrogen atoms. Alright, what is oxygen doing? Oxygen is sharing its electrons with two hydrogen atoms. So this is what
यस, सो जब अपन क्या बात कर रहे थे, दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे. लुक हियर. कहाँ गया? See, this line between two atoms, the shared pair of electrons is said to constitute a single bond between two hydrogen atoms, and single bond is represented between with a line between two atoms. All right. Covalent bonds, when you will study in detail, you will understand that they are very strong, yeah, and a lot of energy is needed to break them. आपने एक ये डायग्राम पढ़ा होगा शायद 9th स्टैंडर्ड में, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को दर्शाया जाता है. उसमें भी ये बॉन्डिंग को ही बताते हैं. यहाँ पे रिंग्स होती है ना. दिस इज द कंसेप्ट. इधर देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. इसकी कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बारे में पूछ रहा है. डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स. यस, डबल बॉन्डिंग यहाँ पे बता रखी है और ये ट्रिपल बॉन्डिंग बता रखी है इधर. ठीक है, जैसा कि आई वाज टेलिंग यू इन द एग्जाम्पल अबव. सो दिस यू कैन डू. दिस वी हैव डन. नाउ लेट अस डू द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. मीथेन का स्ट्रक्चर अपन को बता रखा था, ये अपन ने ज़्यादा कवर नहीं किया. यू कैन डू इट. CH4 होता है मीथेन. ठीक है, वेयर आर वी? यस, सो कार्बन कंपाउंड्स की अपन बात कर रहे हैं. Yes, so the nature of covalent bonds enables carbon to form large number of compounds. Here, yes, to form large number of compounds. Carbon has a unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. Alright. So, which element shows catenation? Carbon. Chains of carbon or carbon atoms arranged in rings. ठीक है, compounds of carbon, single bonds. ठीक है, एक सेकेंड मिक्स हो गया ना. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between carbon atoms are called saturated compounds, and having double and triple bonds are called unsaturated compounds. Alright. No other element exhibits this property of catenation to the extent as seen in carbon. ठीक है, silicon forms compounds with hydrogen which have chains up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. All right, this gives us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. तो अपन क्या प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैटेनेशन, जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया है. एक सेकेंड. कैटिनेशन. ऑलराइट. दूसरी प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे टेट्रावेलेंसी. स्मॉल साइज ऑफ कार्बन. ये अपनी तीसरी प्रॉपर्टी होगी. यही मेजर प्रॉपर्टीज है. ठीक है, अभी टेट्रावेलेंसी के बारे में बात करेंगे. सिंस कार्बन हैज वेलेंसी ऑफ 4, इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements. Alright, so that is what is tetravalency. Stability. Alright.
हाँ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अपन ने यहाँ पे देखा ना कि कंपाउंड्स विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड एंड विच आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स विल बी कॉल्ड unsaturated compounds. All right. Here you see organic compounds. Two characteristics features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, put together gives rise to large number of compounds. Many have seen non-carbon atom and a group of atoms attached to different carbon chains. These compounds were initially extracted from natural substance and were thought that these carbon compounds or organic compounds could be found only within a living system, and it was postulated that the vital food was necessary for their synthesis. So as we know, carbon compounds, except for oxides of carbon, carbonate, and hydrogen carbonate salts, continue to be studied under organic chemistry. So, what do you mean by this? This shows us the versatile nature of carbon compounds. All right, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर अप्लाई यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फील्ड में स्टडी किए जाते हैं. ऑर्गेनिज्म से ही इस वर्ड को भी डिराइव किया गया है. तो तभी लिविंग वर्ल्ड का जो फिनोमेना है उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी नेसेसरी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपनी ये कार्बन की ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत नेसेसरी हैं. ऑल राइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. सिंगल बॉन्ड के साथ अपन ने देख लिया ये क्या है, सैचुरेटेड है. सैचुरेटेड है. एंड इधर भी सैचुरेटेड अपन को दिखा रखा है. ये अनसैचुरेटेड है. अब अनसैचुरेटेड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. सैचुरेटेड क्या है, कंपेरेटिवली कम रिएक्टिव है. ठीक है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है. चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स. ऑल राइट, सो सी मीथेन CH4, ethane C2H6. All right, propane C3H8. Okay, beautiful. Butane C4H10. Pentane C5H12. Hexane C6H14. ओके, प्रोपेन क्या था, C3H8. पेंटेन क्या था, C5H12. ब्यूटेन क्या था, C4H10. देखिए अब ये हो गया ना, विल यू बी माई फ्रेंड. कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट. सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, but carbon forms compounds and bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. All right, so यही चीज़ है, heteroatom specific properties. फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं इनको. देखिए, these heteroatoms confer to specific properties to the compounds regardless of the length and nature of the carbon change and are called functional groups. All right, ये देखो, कार्बोक्सिक एसिड, कीटोन, अल्कोहल OH, ठीक है, ClBr. ऑलरेडी अपन ने देख लिया है, क्लोरो, ब्रोमो, हेलो. यही चीज़ है जो अपन अप्लाई कर सकते हैं. अब होमोजेनस सीरीज की ये बात कर रहे हैं. ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट होगा. उसके अलावा अपन जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, प्रोपेन और ब्यूटेन की पेयरिंग देखेंगे. इसको आप कवर कर लीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से चैप्टर. इसके बाद है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज इज इम्पॉर्टेंट. ऑल राइट, हल्का फुल्का और है, यस, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इज इम्पॉर्टेंट. So I'll tell you, this will be an important issue. We'll have to cover this issue, and then we have this properties of ethanol will also be important. All right, but not very important, but important, yes. And here we will have chemical properties of carbon compounds. All right, where are we are here, nomenclature of functional groups. Okay, nomenclature देखें अब. हैलोजन, क्लोरोब्रोमो, ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, और इसको याद भी कर लीजिएगा लिख लिख कर. ऑल राइट, वील मूव फॉरवर्ड नाउ. केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन, कार्बन इन इट्स ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल जी,
Saturated hydrocarbons जो कि single bond होते हैं will generate and give clean flame, while unsaturated double bonded will give yellow flame with a lot of black smoke and sooty deposit. All right. ये बोल रहा है कि गैस और केरोसिन स्टोव जो कि घर में यूज होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं. और ये सेम चीज अपन इस फिनोमेना में भी अप्लाई कर सकते हैं. सल्फर नाइट्रोजन है ना. वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम. सो ये बोल रहा है हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ईदर कोल और वुड फायर. इफ नॉट, द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस टेक अ क्लोज लुक ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन वुड और कोल स्टार्ट टू बर्न. You have seen above that candle or LPG in gas stove burns with a flame. However, you will observe that coal and charcoal in an angeethi sometimes just glows red and gives out heat without any flame. This is because flame is only produced when gaseous substances burn. When coal and charcoal is ignited, the volatile substances present vaporize and burn with a flame in the beginning. The luminous flame is seen when atoms of gaseous substance are heated and start to glow. The color produced is a characteristic property of that element. कॉपर वायर को आप बर्न करके भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये अपने फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहा है. मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया, डेड रिमेन्स. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट कंप्रेस्ड एंड फॉर्म्ड इनटू फॉसिल फ्यूल्स विच इज, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ कार्बन ओनली. ऑक्सीडेशन की अपन बात करेंगे इधर. ये प्रॉपर्टीज चल रहे हैं, ठीक है. एडिशन रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को अपन देख सकते हैं. यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, HCl निकल रहा है, ठीक है. हायर होमोलोग्स ऑफ एल्केन्स. Some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acids. Many carbon compounds are invaluable to us, but हम दो commercially important compounds की बात करेंगे, एक ethanol, दूसरा ethanoic acids. तो ethanol की प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, रिएक्शन विद सोडियम एक तो, ठीक है. रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल ईथेन है ना. तो हाउ एल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, एक बार ये देख लेते हैं. व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड, इधर देखिए, CH3CH2OH. All right. When large quantities of CH3CH2OH are consumed, it tends to slow the metabolic process and depress the central nervous system. This results in lack of coordination, mental confusion, drowsiness, lowering of normal inhibitions, and finally stupor. Sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired. So lack of judgment, है ना. Unlike ethanol, C6H12O6, C6 C3H2O6, sorry, C3H2OH. I am telling you the glucose formula. C3H CH3, sorry, CH3CH2OH. All right. Unlike ethanol, CH3CH2OH, intake of methanol in very small quantities can cause death. Why? Because when you react it with oxygen, इधर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा. I'll tell you the formula. So when you react it with oxygen, it will be oxidized to methanol in the liver. So methanol reacts very rapidly with the components of the cell and causes the protoplasm of the cell to get coagulated in much the same way an egg is coagulated by cooking. All right. So methanol also affects the optic nerve. So that is why, to prevent the misuse of ethanol produced for industrial use, yes, poisonous substance methanol to it. तो बेसिकली जो अपन इथेनॉल को यूज़ करते हैं ना, उसमें मिथेनॉल डालते हैं सो दैट पीपल कैन नॉट, सो दैट इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. हाँ, dyes are also added to alcohol blue so that it can be identified easily. This is called denatured alcohol. All right, so methanol क्या होगा फिर, CH3OH. मिथेनॉल को क्या बोलते हैं, एक और वर्ड होता है इसके लिए, वुड स्पिरिट या फिर कार्बियोल स्पिरिट, कार्बियोल या वुड अल्कोहल.
alcohol as a fuel. Sugarcane plants are most efficiently converters of sunlight into chemical energy. Sugarcane juice can be used to prepare molasses, which is fermented to give alcohol. All right, molasses fermented to give alcohol. Some countries now use alcohol and additive to petrol. Our country also does that. Cleaner fuel burning in sufficient air and oxygen. All right. Properties of ethanoic acid, commonly called acetic acid, belongs to group of acids carboxylic acids. ठीक है. Acetic acid in water, vinegar, preservative in pickles. Reactions of ethanoic acid. अब इसमें कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दे रखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा. ये रिएक्शन है, ठीक है, एस्टर. ऑलराइट. और ये वाला दे रखा है रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स. ठीक है. अब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स अपन कर लेते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ऑयल ड्रॉपलेट्स बीच में और सोडियम चारों तरफ. ये एक्टिविटी है जिसके तहत ये एग्जाम्पल ये डायग्राम दे रखा है. इट डिमॉन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोडियम इन क्लींजिंग. मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर. सो ऑयल बीच में आ गया और चारों तरफ क्या आ गया, सोडियम आ गया, है ना, सोडियम आ गया और पोटेशियम सॉल्ट्स आ गए. यस. सो the ionic end of soap dissolves in water while carbon chain dissolves in soil. So soap molecules form micelles, one towards the oil droplet and other ionic end facing outside. ठीक है. Emulsion in water. So this helps in dissolving dirt in water and we can wash our clothes clean. ठीक है. See, micelles के बारे में बता रखा है. Soaps are molecules in which two ends have differing properties. One is hydrophilic, that is it dissolves in water, while other is hydrophobic, it dissolves in hydrocarbons. You can read the soap micelles are large enough to scatter light and hence soap solution appears cloudy. Alright, soap in the form of micelle is able to clean and oily dust will be collected in the center of the micelle. Alright, this is achieved by forming clusters of molecules in which hydrophobic tails are in the interior of the cluster. Okay? Okay. यही चीज है. ठीक है. ये देख लीजिए. Action of soaps and detergents is based on the presence of both hydrophobic and hydrophilic groups of molecules. Emulsify the oily dirt and its removal. Carbon and its compound are some of the major sources of fuels. ये देख लिया आपने. कोवेलेंट बॉन्ड्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. दिस इज द थिंग. कार्बन इज अ वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स अपन ने देखा. सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड एंड देन अनसैचुरेटेड, 2 और 3. All right, now let us do periodic classification of elements जल्दी से. Dobnier traits के बारे में दे रखा है. German chemist who tries to arrange the elements and similar properties into groups. 3 elements in one group. Johann Wolfgang Dobnier studied in Germany chemistry. All of this is written. Development of periodic table of elements. Newland's law of octave दे रखा है. Laws of octaves, Newland's laws of octaves. You can study this in detail. यहाँ पे भी दे रखा है और म्यूजिकल नोट्स की मदद से एक्सप्लेन कर रखा है. We will not be delving too much in this chapter. You'll have to do it on your own. This is important. I'll tell you whatever is important. Mendeleev is important. All right. Yes, 63 elements. Periodic law. इसके बारे में आप देखेंगे इधर. ये आप एक बार कर लीजिएगा. अचीवमेंट्स देख लीजिएगा. इसके अचीवमेंट्स पूछा जा सकता है अगर आपके सिलेबस में ही अभी आ रहा है तो. लिमिटेशंस पूछा जा सकता है. ठीक है. तो पहले आप अचीवमेंट्स देखेंगे, फिर आप लिमिटेशंस देखेंगे. उसके बाद मेकिंग द ऑर्डर आउट ऑफ केओस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है. तो अपन ने ट्रांजिशन देखा पूरा. फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हेनरी मोस्ले शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल is written. Here you can see the entire representation. Very important. पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स विल बी एबल टू डू. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड्स क्या है, वेलेंसी क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये देख लीजिएगा. ठीक है.
इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अब लाइफ प्रोसेसेस पे आते हैं। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on street, ये एकदम उसका ट्रेलर दे रहा है चैप्टर का। Basically, yes, life processes can even be movements which are invisible to the naked eye, but they are breathing, so they are alive. Living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Alright, they must keep moving their molecules all around. So, what are life processes? Here you see the definition, which is important. So, maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything and even when they are just asleep. Alright, maintenance job are life processes. Alright, to prevent damage and breakdown, energy is needed from them. This energy comes from outside the body of organism. जैसे sunlight आती है autotrophs को और हमें भी food मिलता है. So there must be a process to transfer the source of energy from outside to inside. तो इसको क्या कहते हैं अपन? ये अपना पहला process हो गया nutrition. एक सेकेंड, ये अपना पहला प्रोसेस हो गया क्या? न्यूट्रिशन. ठीक है. द बॉडी साइज इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. Then we have breaking up process needed to maintain the living structures and the body to grow. So oxidizing, reducing reactions are given. The process of acquiring oxygen from inside the body and use it as processes. The breakdown of food sources is what we call respiration. Alright, single celled organism, no specific organs for taking in food. Exchange of gases or removal of waste may be needed. Alright, so this is also a process. Again, yes, in the multicellular organisms, various body parts have specialized functions they perform. Specialized tissues and specialized, you can say, yes, the diversification of the functions a cell or the various organelles of the cell does. So when chemical reactions use carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts which are useless. So then there will be excretion process. So again, if basic rules for the body design in multicellular organisms are followed, a special tissue for excretion will be developed. Already excretionary tissue. So this is how, see, we will start with nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even we are not doing any apparent activity, energy is being used. And this source of energy and materials is the food we eat. So how do living organisms get their food? The general requirement for energy and materials is common in all organisms and is fulfilled in different ways. Autotrophs, including green plants and some bacteria, the food क्या है? Carbon dioxide and water. और heterotrophs का क्या है? Animal and fungi. हाँ, sorry, heterotrophs organisms include animal and fungi and depend indirectly or directly on autotrophs. Alright, indirectly or directly on autotrophs. Indirect भी हो सकता है कि ये एक एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं और ये ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम कर रहे हैं. तो heterotrophs को और ये सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गए. ये कार्निवोर्स हो गए या वो हो गए अपने basically the ones who consume the grasses like deer, antelope, etc. So autotrophic nutrition, carbon and energy requirements in autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. Autotrophs take in the substances from outside and convert them into stored forms of energy. ठीक है, carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Then starch, and then the food we eat, which is in the form of glucose. See this diagram, cross section of leaf. Here is guard cell, here are air spaces, here's chloroplast, lower epidermis, upper epidermis, waxy cuticle, phloem, xylem, midrib, lamina, leaf bundle, and vein. The absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, reduction of carbon dioxide into carbohydrates. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. ठीक है, ये अपन ने देख लिया.
आगे देखते हैं। हाउ प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अपन ने स्टोमेटा की बात की, स्टोमेटल पोर एंड क्लोरोप्लास्ट, ये खुलता है ओपन। ऑलराइट, this is open stomatal pore, this is closed. Exchange of gases will occur across the surface of stem, roots and leaves. So the plant closes these pores when it does not need what? Carbon dioxide for photosynthesis. Here is an example. This is a very good example. Besides the two activities, yes, sunlight is essential for photosynthesis. ये example ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि yes, nitrogen is essential. Other compounds are essential. Similarly, the sunlight is being taken into account. Now, let us do heterotrophic nutrition. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending upon the type and availability of food as well as material and how it is obtained. Whether food is stationary like grass or mobile such as deer. Alright, so there are different ways in which the food is acquired. Like parasitic nutritive strategy is used by Cascata, Amarbale, orchids, ticks, lice, lichens, tapeworms. Alright. How do organisms obtain their nutrition? Since food and the way it is obtained, the digestive system is different in various organisms. Like the food may be taken by the entire surface in the single cell organism, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions. Alright, instead food vacuole, ठीक है, and then diffuse it into cytoplasm. Paramecium is also unicellular organism. The food is moved by cilia over the entire surface. So these are two unicellular forms. Here you can see the pseudopodia. Alright, food vacuole, the food particle, all of it. Nutrition in human beings. The alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to the anus. We can see that the tube has different parts and are specific in different functions. Alright. So here you will see we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate the particles which are small and of same texture. ठीक है, enzymes की बात कर रहे हैं अब, starch, sugar. Alright, it is necessary to move food in a regular manner in digestive tube so that it is transferred properly. These peristaltic movements occur along the gut. Alright, so here you can see esophagus, diaphragm, gallbladder is there, bile duct is there for bile juice, stomach is there, HCl, small intestine, large intestine which is known as colon. Alright, appendix is there, anus is there, vestigial organ. Alright, liver is there. From mouth, the food is taken to the stomach through food pipe. Food pipe is called what? Esophagus. Alright. Then muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juices. Then the digestion functions are taken care by gastric glands. They release hydrochloric acid, pepsin and mucus. Hydrochloric acid creates acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. What other functions do you serve? Do you think are served by this pepsin, hydrochloric acid? You can write down here. The exit of food is regulated by sphincter muscle, alright, which releases it in small amounts into the small intestine, the longest part of alimentary canal. So meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have shorter small intestine. The small intestine and the size is the site for complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. It receives the secretion of liver and pancreas for this purpose. The food coming from stomach is acidic and has to be made alkaline for pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplish this in addition to the acting on the fats. So the fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them. ठीक है, यही चीज है pancreas secrete pancreatic juice which contains enzyme like trypsin. You can be asked like pancreas का trypsin है, ठीक है, and lipase for breaking down emulsified fats.
Then they go towards the walls of intestine, and then the unabsorbed food is sent to large intestine, where villi is there. Villi is all right. Dental caries, tooth decay, gradual softening of enamel. We read about it. Okay, this is there. रेस्पिरेशन की अपन बात करें, इधर अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको. ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, देन pyruvate which is 3 carbon molecule, then in absence of oxygen ethanol, carbon dioxide और energy. ठीक है, in lack of oxygen lactic acid and energy, जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं तब. और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी लाइक इन माइटोकॉन्ड्रिया. ऑलराइट. ATP देखिए, ATP is the energy currency for most cellular processes. The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. ठीक है, ADP plus P energy is equals to ADP P ATP. All right, phosphate. So endothermic process in the cell. ATP क्या है अपना करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस. ऑल राइट, जिसको अपन कहेंगे, देखिए, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज ATP टू डिराइव द रिएक्शंस. So when terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per molecule is released. समझ में आया? ATP can be used in cells for contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other things. अब एरोबिक रेस्पिरेशन की अपन ने बात कर रखी है इधर. ठीक है, यही है. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. फिशेस के पास गिल्स होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड बिकॉज इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. ऑलराइट, दिस इज देयर. ये देखिए, नेजल पैसेज दे रखा है हमें, फैर्निक्स लैरिंक्स दे रखा है, ट्रेकिया दे रखा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रंग, रिब्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक. इसको आप डिटेल में 3D वाला वीडियो भी देखिएगा, इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आप समझ पाएंगे. ठीक है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है अपना इसका. द एल्वियोलर सरफेस, if the alveolar surface were spread out, it would cover about 80 meters square, which is a lot of area. All right, it is around 0.080 kilometer square. Alright, how much do you think the surface area of a body is? Consider how efficient exchange of gases have become because of the large surface available for exchange to take place. ठीक है? Yes. It is estimated that it would take 3 years for molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. If diffusion were to move the oxygen in our body, so hemoglobin transports that. Alright, transportation की बात कर रखी है इधर. The oxygen is carried by red blood cells and many salts are transported in the blood. So blood is what? Fluid. Blood consists of what? Fluid medium called plasma. Plasma supports food, carbon dioxide and nitrogenous wastes. इधर से अपन देखेंगे, हार्ट का डायग्राम दे रखा है. इधर देखिए, वेना कावा, राइट. So this is not a color diagram, but you will be able to understand. ठीक है, aorta, vena cava, pulmonary veins, left atrium, इसको एक बार डिटेल में अपन पढ़ लेते हैं. The heart is a muscular organ which is as big as our fist. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers, alright, to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. So the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for carbon dioxide to be removed and oxygenated blood from the lungs to be brought back to the heart. Alright, so step by step देखें तो सबसे पहले oxygen rich blood from the lungs come to thin walled upper chamber of the heart on the left. Alright, the left atrium. ठीक है जी, आ गया. The left atrium reacts when it is collecting the blood. Alright, सबसे पहले इसके पास आ गया. Then it contracts. Well, the next chamber, ये पहला हो गया. Left ventricle expands so that the blood is transported to it. Here.
When the muscular left ventricle contracts, in its turn, the blood is pumped out of the body. Upper chamber on the right atrium expands it. Alright, here, pumped out of the body. Now we have the deoxygenated blood ना. ये उल्टा कर दिया मेरे को, ये ब्लू से बनाना चाहिए था. I should have drawn it with red. Alright, ये ऐसे हो गया. ठीक है. Pumps it for oxygenation. Since ventricles have to pump the blood into various organs, they have thicker muscular walls than atria do. Alright. So here pulmonary artery उसे बाहर भेज देगी फिर. ठीक है. समझ में आया. पल्मोनरी वेन से अंदर आया ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर चला गया. Walls ensure what? That the blood does not flow backward when artery or ventricles contract. Here you can see, this is also an important diagram. How oxygen enters blood and lungs. Enters the blood and lungs. Blood pressure की बात करें तो the force that blood exerts against the wall of vessel is called blood pressure. The pressure is much greater in arteries than in veins. The pressure of blood inside the artery during ventricular contraction is called systolic pressure. And the pressure in artery during ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg, and diastolic pressure is 80 mm of Hg. So relaxation pressure is 80, and then 120 is what? Contractionary pressure. Alright, so 120 to 80. So the blood pressure is measured with an instrument called sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Alright. High blood pressure is called hypertension. It is caused by contraction of arterioles, which results in increased resistance to blood flow and can result in the rupture of artery and internal bleeding as well. So the blood pressure needs to be controlled and measured, and this is very important with the context of this particular topic of respiration, which we are trying to cover. Transportation, which we are trying to cover, and it can be asked as a short note. And this is a very important fact. Sphygmomanometer. Alright, so this is there. Now we will study what? See, here we have studied what? 80 to 120, and this is what pressure, which is contractionary. It is called systolic pressure, and which is relaxation pressure, it is called diastolic pressure. Alright. Tubes, blood vessels and limbs. Alright, so this is transportation के अंदर ही we will study about this. कि ये प्लेटलेट्स की बात हो गई भाई. जब अपना चोट लग जाती है तो there is the pressure inside which tries to cover the injury or the wound, otherwise blood loss can occur. So that is the basic function. And blood vessels में भी we will see that capillaries की बात करें, small vessels have walls which are 1 cell thick and are called capillaries. So exchange of material takes place. Lymph. See, there is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, protein, and blood cells escape through intercellular spaces. Lymph drains into lymphatic capillaries from intercellular spaces, which form the large lymph vessels, which finally open into the veins. Now we are done with in animals. Now we are doing transportation in plants. Already xylem and phloem की बात हो रही है. इधर xylem vessels and tracheids of roots में पाया जाता है. Continuous system of water conducting channels. Difference in concentration. बिल्कुल. So xylem is transporting water, phloem is transporting food. Here you can see, ठीक है. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using the energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it.
This pressure moves the material in phloem to tissues which have less pressure. This allows phloem to move material according to the plant's needs. Excretion की अपन बात करें, इधर you can see this diagram wherein kidney is shown, renal vein is shown, yes, renal artery is shown, left ureter is shown, vena cava is shown, and urinary bladder is shown, and urethra is shown. So vena cava helps in excretion. Alright, many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion of body surface into the surrounding water. Alright, bodily, yes. So, yes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same functions. Herein, this is very important, nephron. So, collecting duct is there, tubular part of nephron is there, glomerulus is there. यहाँ पे आप functions लिख लीजिएगा ऐसे ऐसे highlight करके. अभी I'm not reading this entirely, but you must read this entirely. Alright, because see nephrons are there. Nephrons filtration units होते हैं जो किडनी के अंदर होते हैं, और हर यूनिट के अंदर का ये जो, जैसे अपन यहाँ पे बोमैन्स कैप्सूल देख रहे हैं, हर एक का एक फंक्शन है. सो राइट ऑल ऑफ दिस. आर्टिफिशियल किडनी की बात करें, हेमोडायलिसिस. सो किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल. सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी, restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidneys. This leads to accumulation of poisonous waste in the body. Alright, and can even lead to death. In case of kidney failure, artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from blood through dialysis. Alright. Alright, so diffusion process की बात कर रहे हैं, कैसे purified blood is pumped back into the patient, similar to the function of a kidney. Yes, but there's no reabsorption involved. Normally, in a healthy adult, initial filtrate in kidneys is about 180 liter daily. However, the volume actually excreted is only a liter or two a day. Alright, because the remaining filtrate is reabsorbed in kidney tubules. So this is what is called hemodialysis process. Alright, accumulation of because kidneys are what? Kidneys purify the body so that the waste is not accumulated. Osmotic pressure of blood को याद रखेंगे, और ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को याद रखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एंड इवन दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. You must label all the parts correctly, and you must draw the diagram. Excretion in plants की बात करें तो plants use completely different stages for excretion than those of animals. Oxygen itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. Alright, so transpiration की बात करिए इसमें. Many plants' waste productions are stored in cellular vacuoles. These products may be stored in leaves that fall off. बिल्कुल. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. ठीक है, ये सब अपन ने देख लिया है. एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से. रेस्पिरेशन में भी एरोबिक और एनरोबिक. ठीक है, अपन ने रेस्पिरेशन का डायग्राम देखा था जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन था, एनरोबिक रेस्पिरेशन था, लैक्टिक एसिड वाला रेस्पिरेशन था ड्यूरिंग एक्सरसाइज. एनरोबिक किस में होगा? यीस्ट में होगा. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. लेट अस टेक वन शॉर्ट ब्रेक and in 1-2 minutes we will start with this chapter.
Control and coordination. So, in the previous chapter, we looked at the life processes involved in the maintenance function of living organisms. Now, we will study about the brain. See, movements as a response to change in the environment of the organism. Introduction है. ये रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं कि अपन कुछ गर्म टच करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है. सेल बॉडी न्यूक्लियस डेंड्राइट एक्सन नर्व एंडिंग. ठीक है, ऐसे प्रोसेस ट्रांसमिट होता है. See, gustatory receptors will detect taste, while olfactory receptors will detect smell. At the end of axon, the electrical impulse will set off and release some chemicals, then synapse, and then electrical impulse in dendrite to the next neutron. तो ऐसे travel करेगा वो neuron to ऐसे travel करेगा वो. Thus, there is no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons, specialized for conducting information. Alright. See, mitochondria is also here. What happens in reflex action? So, reflex is a very commonly used term. ठीक है, यही चीज़ है कि आई पुल्ड माई हैंड बैक एंड आई वाज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली. सो ये सारी चीज़ है. वन सीमिंगली सिंपल वेज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉर्न. सो दैट इज वाई द हैंड इज टेकन ऑफ एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इम्पल्स. So thinking is a complex activity. That is why nerve impulses from neurons are made in such a manner. So one second. बिल्कुल, हम हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता. अगर कुछ गर्म हाथ में गिर जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल जलाई और हाथ पे गिर गई, तो हमें रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं. तो यही चीज़ है. सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स हमें इफेक्टर मसल को वो देते हैं कमांड, तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं. रिले न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, मैसेज टू ब्रेन. तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है बहुत, इसको बना लीजिएगा. ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो यही चीज़ है. ठीक है, इस डायग्राम को देखते हैं अपन और वेरियस फंक्शंस को भी देखेंगे. ठीक है, एक सेकेंड, चलिए ये पढ़ लेते हैं पहले. है ना, सेरिब्रम इज द यस फ्लूइड, और उसका वो जो सब्सटेंस होता है अपना, और क्रेनियम हो गया, फोर ब्रेन हो गया, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है. सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं. जैसे कुछ बैलेंस बनाने का काम करते हैं, कुछ अपने इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, कुछ वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं. और स्पाइनल कॉर्ड है अपनी, जो कि पूरे अपने क्या कहते हैं उसको, बेसिकली जैसे अपन को मसल मूवमेंट्स करने हैं जो बियॉन्ड आर कंट्रोल है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है. सो इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, salivation, vomiting are controlled by medulla in the hind brain. इधर लिख लेते हैं. ठीक है, so many involuntary actions are done by hind brain and midbrain. ठीक है, इनवॉलेंट्री. ठीक है, हाँ. अब जो एक्टिविटीज है जैसे पिकिंग अप अ पेंसिल, राइडिंग बाइसाइकिल, ये हिंड ब्रेन करता है. लाइक मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस. सेरिबेलम का है, इधर देखिए, इधर. ठीक है, पोस्चर, बैलेंस. यहाँ पे अपन ने क्या देखा, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग और ये सब. ठीक है, तो ये अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया है. अब अपन डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं. हाउ आर टिश्यूज प्रोटेक्टेड. सो अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटी नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड. फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइन सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स. ऑलराइट. ठीक है, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. सो फार वी हैव बीन talking about nervous tissue and how it collects information and sends around to the body. तो ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स की बात कर रहे हैं इस केस में. कोऑर्डिनेशन देखें तो एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, बट प्लांट्स नीदर हैव अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल. सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई.
You must have heard about touch me not and leaves of chui mui, है ना? Touch me not plant of mimosa family, they begin to fold and drop. So when, and even when a seed germinates it goes down the air. So yes, so रिस्पॉन्स टू टच तो होता है, तो देखिए ये भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को दर्शाते हैं. और इधर आप देखेंगे, if we think, yes, so information has to be communicated in the plants. The plants also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell. ठीक है, electrical chemical means का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं plants to convey the information from cell to cell. Finally, again, as an animal, some cells must change shape in order for movement to happen. ठीक है, swelling, shrinking, alright, this is, and movement due to growth also. Tendrils, some plants like pea plants climb by the way of tendrils, alright. So ये भी directional movement है. अभी आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की तरफ वो झुक जाता है, और ये जियोट्रॉफिज्म, ये ग्रेविटी की वजह से होता है, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें 3 मार्क्स का अच्छा आंसर लिखा जा सकता है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की बात करी गई है. ठीक है, अब हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं अपन, इस डायग्राम के साथ समझ लेते हैं. अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात हो रही है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात हो रही है सबसे पहले, तो एक्सोक्राइन की नहीं, एंडोक्राइन की. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, एक बार डेफिनेशन देख लें अपन. इधर देखिए, animal hormones are part of endocrine system which constitutes the second way of control and coordination in our body. All right, enable us to deal with the situations like fear and fight hormone is there, pituitary gland is there, pineal gland is there. This releases the growth hormone. Sorry, this releases the growth hormone. Thyroid gland is there, thyroxine hormone is released. Thymus is there, pancreas is there for insulin. We have adrenal glands. We have adrenal glands. Yes, we have testes, we have ovaries, we have thymus, we have hypothalamus. Alright, so all of these endocrine glands are very important. Alright, let us examine some examples to understand how hormones helped in coordinated growth. Coordinated growth. क्या आपको पता है एक डॉक्टर भी होता है जिसे एंडोक्रायोलॉजिस्ट कहते हैं. We have also seen salt packets which say iodized salt or enriched with iodine. So ये अब किसकी बात कर रहे हैं, अपने thyroid gland की बात कर रहा है. Thyroxine, see here, thyroid gland is to make thyroxine hormone which regulates carbon dioxide, protein and fat. एक second. Metabolism to provide the balance of growth. Iodine is necessary for synthesis of thyroxine. Alright. Yes. If iodine goes in deficit, might suffer from goiter. ठीक है, swollen neck. Yes, then here it is talking about the pituitary gland. Pituitary gland. ठीक है, growth hormone GH. ऑलराइट, और ये टेस्टिस और ओवरीज की बात कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं. तो एस्ट्रोजन इज नॉट ESTROGEN, इट इज OESTROGEN. ऑलराइट, यस. और ये किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलिन की. कौन सिक्रीट करेगा जी इंसुलिन, पैनक्रियास सिक्रीट करेंगे इंसुलिन. पैनक्रिया किधर है, पैनक्रियास इधर देखिए, इधर PNCREAS. So if it is important that hormone should be secreted in precise quantities, we need mechanisms through which this is done. So the timing and the amount, timing plus amount, ठीक है, are regulated by feedback mechanisms. So for example, if sugar levels in blood rise, then ज़्यादा insulin produce होगा. Sugar levels fall, insulin secretion will be reduced. ठीक है, तो sugar, एक second, this is important for you. So if it is detected by the cells of pancreas which respond by producing more insulin, as the blood sugar level falls, the insulin secretion is reduced, and if sugar levels rise, pancreas respond by producing more insulin. Alright.
ये चीज हो गई। रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, मैसेजेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट, एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। अब अपन आगे देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यही चीज़ है, हाउ डू दे मेक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। डीएनए की बात करेंगे अपन, और जो इंफॉर्मेशन सोर्स है डीएनए फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अब देखिए, डीएनए तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल है फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें अपन नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा अपन इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, काफ़ी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तो उसकी बात करेंगे। देखिए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले ये देख लेते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो फिजन फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ऑलराइट, सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। However, unicellular organisms show somewhat organization of their bodies, like more organization, ठीक है। लीशमैनिया, यहाँ पे अपन प्लाज्मोडियम में देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, आपने पढ़ा होगा। स्पाइरोगायरा में सिंपली ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मेच्योरेशन, ठीक है। रीजनरेशन आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल। प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ये आई एम डूइंग इट वेरी मच फास्टर राइट नाउ, यू कैन रीड इट, ठीक है। प्लानेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, बडिंग होती है। हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल्स, ठीक है। टेंटिकल्स हो गए, बड हो गया, ठीक है। हाइड्रा में क्या हो रही है, बडिंग हो रही है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में हो रहा है, बताइए। यस, रूट स्टेम और लीव्स का यूज करके प्लांट्स में होता है, शुगर केन, रोजेस, ग्राफ्टिंग मेथड हो गया, इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट प्लांट्स एंड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्टली ऐसा ही होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये देखिए, सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉच ऑफ लीफ मार्जिन ब्रायोफाइलम fall on the soil and develop into new plants. Tissue culture की बात करें तो new plants are grown by removing tissue or separated cells from growing tip of the plants. They are then placed in an artificial medium where they are dividing rapidly to form small group of cells or callus. Alright, where they divide rapidly to form small group of cells or callus. This callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. Then the plantlets are then placed into the soil so that they can grow into the mature plants. Using tissue culture, many plants can be grown from one parent plant in disease-free conditions. This technique is commonly used for ornamental plants. All right, spore formation की अपन बात करें तो yes, the blobs sporangia की बात आ जाती है इसमें। yes, so they will begin to grow. ये भी इंटरेस्टिंग फॉर्म है, तो आप इन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा बिना देखे। ऑलराइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स, हेंस अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू चिक्स, सो बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स, yes, DNA as well as cellular apparatus. So DNA copying mechanism is there, which we call DNA copying mechanisms are not absolutely appropriate. तो exactly हम वैसे तो नहीं दिखते जैसे अपन अपने मम्मी या अपने पापा दिखते हैं, या अपने ग्रैंडफादर या अपनी ग्रैंड मदर दिखती है, या अपने ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंड मदर दिखते हैं। अपन थोड़े से सिमिलर होते हैं उनसे, पर पूरे सिमिलर नहीं होते हैं उनसे। ऑलराइट, या थोड़े बहुत ही सिमिलर हो पाते हैं उनसे। तो जो भी ये वेरिएशंस हैं वो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स को क्रिएट करते हैं। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स सच प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। ईच न्यू जनरेशन इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। ये आप देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अपन देखें तो एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, स्टेमन एंड स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ovary, sepal, petal. Yes, so pistil is different female segment and stamen is male segment, and then the sexual reproduction of plants happen. See here, example आपको याद होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल पपाया एंड वाटरमेलन, बाइसेक्सुअल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ऑलराइट, अब देखिए मेल जर्म सेल, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है। यस, ट्रांसफर ऑफ पोलन, सिग्मा,
through stigma है ना, this transfer is happening. You can see this in detail. This is very important diagram here. Pollen tube is there, female germ cell is there, so germination of pollen on stigma is happening. Reproduction in human beings, if we see here, we can observe that we have to firstly study about the adolescence, wherein the male and female genders become cautiously aware of both their own bodies and others in new ways. All right, so there are physical changes which come, and there are emotional and psychological changes which also happen during these ages when adolescence is happening. So, here you can see that these changes take place very slowly over months. All right, like darkening of skin near nipples or new hair growth on face, all these changes, all right, they do not happen at the exact age. In some people they happen early, while in others they happen very slowly. So this is what is called, yes, sexual maturation at a particular age. Specialized cell types in multicellular bodies carry out specialized functions. So germ cells participate in sexual reproduction, which is also a specialized function as we have studied in the previous chapter, life processes. So this adolescence or this stage of sexual maturity is called what? Puberty. All right. So how do these changes? Okay. So how do all these changes that we have talked about link to the reproductive processes? Two individuals have to join together for reproduction. So it can happen if two individuals, the internal transfer of germ cells for fusion will occur only when uh, the individuals will join their bodies together. So if animals are to participate in the process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. And many changes during puberty, such as new hair growth patterns and scientific signaling of sexual maturation, is taking place. All right, so here you can see, yes, the male reproductive system. Now this is also a very important diagram. All right, here you can see the ureter, seminal vesicle, you can see bladder, prostate gland, penis, urethra, testes, and vas deferens and scrotum. All of them have their specific functions, like the lowering of the temperature in the scrotum is very essential. And germ cells, है ना, to move towards the germ cells, the sperms have a long tail. Now in the female reproductive system, you can see and draw this diagram, है ना, because see, diagrams play a very important role. So you must always remember all the diagrams कि भाई fallopian tube इधर को है. All right, uterus, cervix, vagina. All right, so here you can see that, yes, sperms enter through vaginal passage during sexual intercourse. Then the fertilized egg zygote gets implanted in the lining of the uterus and starts dividing. We have seen in earlier sections that mother's body is designed to undertake the development of a child. So hence uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. So the lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from mother's blood with the help of specialized tissue called placenta. Disc shaped embedded tissue in uterine wall. All right, so this is there. Blood spaces, yes, yes. So child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. So we can see this. And then what happens if egg is not fertilized? Then the process of menstruation is talked about 2 to 8 days every month. All right, lining is not needed any longer. So then this lining, or this lining slowly breaks and comes down through vagina as blood. Now we will see about reproductive health. So herein we will see various infections like warts and HIV/AIDS can take place. So to prevent them, covering called condom is there, and many other contraceptives are there. See here, copper T is placed in uterus to prevent pregnancy. Okay, and along with that, see here, population explosion is being talked about. Size of population is a concern. Yes, mechanical barrier we have seen. Then orally pills we have seen. They can lead to side effects and hormonal damage.
or hormonal, what you can say, hormonal imbalances, sorry. They can destroy hormonal, they can cause hormonal imbalances. So sex ratio, we can talk about reckless female foeticide sex ratio is declining. All right, this is there. So this is also a problem ki bhai females are female feticide is happening, female infanticide is happening. So this is a very important social problem. So the sex ratio has to be maintained, the male is to female ratio, and in the sex ratio you will see the female ratio is more as compared to the male ratio. So if a women, okay, so this is there, the questions are there, and we have another chapter. Okay, hereditary and evolution. So we have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction, and number of successful variations are maximized. All right, so this is there, accumulation of variation during reproduction. This leads to, अब inherited traits की बात कर रहे हैं, heredity की बात कर रहे हैं. Alright, the ears, free and attached ear lobes is a very good example. मेंडल के contribution थे इस केस में काफ़ी सारे. See, Mendel was educated in, okay, this is there. Yes, Mendel used this peas wala example, different characteristics, tall plant, short plant, progeny, calculated the percentage of tall and short progenies. Yes, so you should read about this case study. I am not covering this. This is a very easy case study. You will be able to grasp it in one go. ठीक है, टॉल ऑफस्प्रिंग हो रहे थे और टॉल ऑफस्प्रिंग, ये इसके बारे में ही बता रखा है कि कैसे मतलब टॉलनेस और शॉर्टनेस वर इनहेरिटेड एंड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज दे वर वेरीड. So this is there, this is there. Sex determination is there, male, female. Okay. So yes, most human chromosomes have maternal and paternal copy. We have 22 such pair of chromosomes, but one pair is called sex chromosome. Alright, women have perfect pair of sex chromosome XX, but men have XY. Alright. So yes, half of the children will be boys and half of the children will be girls. Alright, XX and XY. So this is there. Evolution में अपन क्या देखेंगे, यही चीज है ना. यस, वो बीटल का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि ग्रीन और रेड. तो यस, ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि कलर वेरिएशन हो जाता है तो कौन सा वाला बीटल बेसिकली हाँ सर्वाइवल एडवांटेज एंजॉय करेगा. ये आप कर सकते हैं. अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में बता रखा है. दिस इज ऑल्सो ईजी. सी, नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के नॉट बी पास्ड ऑन डीएनए ऑफ अ जर्म, देयरफॉर यस, यहाँ पे डार्विन की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. Of course, see, one in one experiment the tail removal was shown, so it makes sense that because of the removal of tail, it cannot change the genes of the germ cell of the mice. All right. Yes. Yes. So study of heredity and genetics is important for understanding evolution. Darwin's theory of evolution tells us how life evolved from simple to complex forms, and Mendel's experiment gave us mechanisms of inheritance of trait from one generation to another. ठीक है. See, JBS Haldane. JBS Haldane suggested that life must have developed from simple inorganic molecules which were present on Earth soon after it was formed. Stanley L. Miller and Harold C. Urey. Atmosphere similar to that of early Earth. This was maintained. Alright, so this was then experiment. So of as to how life existed. Then they stimulated various conditions like Miller and Urey experiment. It is called like lightning and everything. Speciation. Yes.
See, basically you have to understand that speciation is nothing but an evolutionary process where populations evolve to become distinct and reproductively isolated species. For example, there is a mechanism like genetic divergence, reproductive isolation, ability to interbreed. All of this is a part of speciation only. Like Darwin's finches wala example you can take, है ना? Beak shapes. Alright, beak shapes, speciation. Alright. So this is there. Evolution and classification is there now. See here, ये frog का हाथ, ये lizard का, ये human का और ये bird का. तो evolutionary relationship अलग अलग हो गई. Homologous organs, ठीक है. ये एनालोगस ऑर्गन्स, विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बर्ड. ठीक है. तो क्या डिफरेंस हुआ एनालोगस और होमोलोगस में? देखिए, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो सिमिलर एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर का है. सिमिलर से दिख रहे थे अपन को वो सारे हाथ, है ना. पर एनालोगस जो स्ट्रक्चर्स है उनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन ही अलग है. अलग एनवायरमेंटल प्रेशर में बने. जैसे यहाँ पे तो बैट का दे रखा है. अगर आप यहाँ पे इंसेक्ट का भी विंग ले लोगे तो बर्ड के हाथ जैसे थोड़ी इवॉल्व किया है वो. तो एनालोगस हो गया. ये जो सेम उसमें बने हैं वो होमोलोगस हो गए जी. इंसान ह्यूमन भी तो इवॉल्व किया है फ्रॉम द मरीन मैमल टू बीइंग. उसके पहले रेप्टिलियन, फिर उसके बाद उसके बाद रेप्टिलियन, फिर उसके बाद यू कैन से यस ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड. सो कॉमन एंसेस्ट्री को दिखाते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स अपन को. फॉसिल्स की बात कर रहे हैं. इट इज़ वेरी इजी, यू कैन कवर दिस. ये फिश नाइटिया का फॉसिल है. ये इन्वर्टिब्रे का फॉसिल है. अमोनाइट का. ये ट्राइलोबाइट का फॉसिल है. ये राजासोरस का फॉसिल है. ये ट्री टंग का फॉसिल है. सो लेयरिंग की बात कर रहे हैं. दिस इज फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस. एवोल्यूशन बाय स्टेजेस. फ्लैटवर्म नेम प्लानेरिया हैज वेरी सिंपल आइज. यस, डिटेक्ट लाइट. दिस इज important. Wild cabbage can be kale, red cabbage, broccoli, cauliflower and kohlrabi. So this is the evolution of white cabbage which has been shown in this. All right. Molecular phylogeny देखते हैं. We have been discussing how changes in DNA during cell division would lead to changes in the proteins that are made from this new DNA. Another point that has been made is the changes would accumulate from one generation to the next. So could this be used to trace the DNA backwards in time and find out where each change diverged from one another? Molecular phylogeny does exactly this. All right. Yes, evolutionary relationship is there. Evolution should not be equated to progress. All right. ये दे रखा है evolution should not be equated with progress. Why do you think evolution should not be equated with progress? It is like because non-linear process है. Evolution is not synonymous to progress. Because evolution linear नहीं होता. Progress linear हो सकती है पर evolution linear नहीं होता. एवोल्यूशन तो अडेप्टेशन है ना एनवायरमेंटल चेंजेस को. तो इट्स लाइक नॉट परफेक्शन और हायर कॉम्प्लेक्सिटी. एवोल्यूशन तो सिंपलर भी हो सकता है. एवोल्यूशन है ना बैक्टीरिया का भी होता है पर बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स थोड़ी हो रहा है. तो कोई फिक्स्ड गोल नहीं है. और बेसिकली हम कह सकते हैं कि अडेप्टेशन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि अपन बेसिक से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. ऐसा नहीं है. एवोल्यूशन एक अडेप्टिव प्रोसेस है. तो अपन उसे अडेप्टेशन कहें तो बेहतर है. ठीक है, अडेप्टेशन.